Yeah, good morning, friends, and welcome to the session. Are you all there? I'll also just start the session on my mobile, so I know things are working fine. Yeah, I think we are getting it absolutely perfect. So कल का दिन जो था, it was more of a range bound session, but 15 मिनट का range breakout work किया, and we did had a very quiet markets. So now let's see what lies ahead. Yeah, good morning, Atul. So I'll read out the disclaimer before we start the session, and the disclaimer says that this is for educational and informational purposes only, and it does not constitute financial advice. Okay, I have not shared my screen. Let me do it. So I'll read out the disclaimer. Let it come on the screen, friends. Yeah. The disclaimer says that this is for educational and informational purpose only and does not constitute financial advice. Yeah. Good morning, Atul, Dr. Vijay. So now let's straight go to the price charts and we follow the process. First, we check the headlines. Are we missing anything or should we follow something? देखते हैं माहौल क्या बन रहा है. कल यूएस मार्केट्स अगर आप देखिए तो करीब करीब 1% डाउन था, जो कि है 500 पॉइंट. बट एट फ्यूचर्स आपके 300 पॉइंट ऊपर है, तो 0.40 ही नेट नेट कट है. बट इट्स just seeing the figures and the sentiment behind it. Yeah, good morning, Praveen. So, US stock futures surge after Trump signs Iran deal, market digest hawkish Fed. इंटरेस्ट रेट में फेड इज हॉकिश नॉट डोविश. हॉकिश का क्या होता है? कोई अच्छा बहुत नहीं बोल रहा है, ना ही खराब बोल रहा है. डोविश मतलब बहुत कुछ अच्छा अच्छा ही बोल रहा है. सो फेड का जो स्टेटमेंट था, आई थिंक इट इज मोर ऑफ अ हॉकिश फ्रेड्स. यूएस फ्यूचर्स आर मोर और लेस 300 पॉइंट्स अप. तो ग्लोबली ऐसा कुछ माहौल बहुत नेगेटिव भी नहीं है, बहुत पॉजिटिव भी नहीं है. वंस वी डोंट हैव सच अ सिचुएशन, then we go on the plain price action and our charts. Entire Europe is also in red. Bovespa देख लेता हूँ, which is I think it's up. It's up. मोर और लेस सारे मार्केट्स ग्रीन में ही है, अदर देन हैंगसेंग जो इतना फर्क नहीं पड़ता है. So start of the day we have the overall environment does not suggest us anything negative. After that we go to the price charts. At always हम start करते first with crude. Crude अभी कहीं ना कहीं $80 के आसपास जाके settle करेगा. So which we had seen, and crude is after giving the diamond breakout. This was a target pattern which is around $70. Or crude more or less is around the same line. So the crude bull is over. That's what it's saying. Geopolitical concern has eased down. और जो crude का जो spike आया था ना, वो demand driven नहीं था, geopolitical concern था. अगर जियोपॉलिटिकल वही कंसर्न खत्म होते हैं तो क्वाइट नॉर्मल है. जो डायमंड का ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे ऑन द डाउन साइड, क्रूड इज हेडिंग टुवर्ड्स द 68-70 मार्क. सो क्रूड अभी इज नॉट ट्रबलिंग द मार्केट्स. आफ्टर दैट लेट्स गो एंड चेक इंडिया विक्स. अगर इंडिया विक्स हम देखते हैं तो ये चैनल के नीचे में इंडिया विक्स. सो वॉलेटिलिटी इज ऑल्सो कूलिंग ऑफ. क्रूड इज कूलिंग ऑफ. इंडियन मार्केट्स वोलेटिलिटी इज कूलिंग ऑफ. तो वो एक स्विंग डायरेक्शन के लिए पॉजिटिव है. डोंट इंटरप्रेट ऑल दिस फ्रॉम द इंट्राडे पर्सपेक्टिव. गेटिंग इट. बहुत बार कैसा होता है ना, अगर स्विंग सेटअप अच्छा हो जाता है तो आप इंट्राडे में बहुत ज्यादा तेजी में आ जाते हो. डोंट मेक दैट मिस्टेक्स. गॉट इट अतुल एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स? धीरज, डे ट्रेडिंग अलग रखो, स्विंग अलग रखो, पोजिशनल का डिसीजन मेकिंग अलग रखो, इन्वेस्टमेंट अलग रखो. डोंट मिक्स एवरीथिंग टुगेदर और एल्स इट विल बी वेरी टफ फॉर यू. सो इतना देखने के बाद नाउ वी आर गोइंग टू गिफ्ट निफ्टी. लुक्स गिफ्ट निफ्टी माइट बी फ्लैट और मोर और लेस थोड़ा बहुत ऊपर होगा. Yeah, gift nifty is more or less down 12 points, which is flat.
इतना ही पर्पस है गिफ्ट निफ्टी का। मैं डाइवर्जेंस देखता हूँ, सो देयर आर नो डाइवर्जेंस। और गिफ्ट निफ्टी भी देखिए लास्ट स्विंग हाई पे अटक रहा है, ये गैप पे। सो बट लुक्स मार्केट इज ओके। So after that, only we go to Nifty. Now, Nifty mein, this gap is going to trouble us. Yesterday we had a high over here. Now, once we drop a line over here, friends, you know why we drop it? Because then we look left on a 60 minutes to see whether some strong big seller is there or not. So if you see, this is what the daily gap is. And if you can see over here on a 60 minutes time frame, at this gap, I'm taking this entire zone. Fine. Once I take this entire zone, then this becomes my resistance. Got it now? How we figure out what we call as a supply level in the markets. Above that, we again have one more gap of 24,255. Fine. So we'll stick here. Supply मिल गया, sellers का है, अभी डिमांड देखते हैं. So then you can fine tune all this on a 60 minutes. देखिए कल मार्केट गैप अप खुला, नीचे आया, और कहीं ना कहीं इफ यू सी दिस बेस ओवर हियर वर नॉट डिस्टर्ब. कैन यू सी दिस बेस इज इंटैक्ट? तो ये थोड़ा हाई ऑन लोकेशन हो जाएगा विच इज 24,000. एंड इफ यू वांट वन मोर लेवल, the second base is over here. All the bases are your demand and supply. Please remember that. So this is how the market is looking. Your trading time frame, आप अपना trading time frame, either you can keep it on a 15 minutes or on a 5 minutes time frame. So now let me go on a 15 minutes. देखिए 15 minutes में फाइन ट्यून की जगह नहीं है, चाहिए तो मैं ये कर देता हूँ. दिस वन आई विल ब्रिंग इट हियर. 15 में आपको सिर्फ फाइन ट्यून ही करना है, नथिंग मोर. फाइन. एंड ये जो सप्लाई हमने मार्क किया था, शुड वी गो एंड फाइन ट्यून दैट ऑल्सो? डेफिनेटली, because you can't have such a big stop losses. So if you take this entire, the gap जो है यहाँ से start हो रहा है. So I've just fine tuned it to this high and the start of the gap. Now you got it. How we mark the levels? High पे mark किया और gap जहाँ से start हुआ. Give me a okay or a yes. This is how you mark your supply levels. Atul, I'll wait for somebody's yes. Okay. Atul, Devra Sahab and all, great to see you on a daily basis. So now this is how market is positioned today in terms of where the buyers are and where the sellers are. और एक चीज आप रिमेंबर करिए, अगर दो मैचिंग हाइज है, जैसे ये हाई निकल गया, इफ यू वॉच दिस, व्हाट हैपेंड वंस दिस हाई वाज टेकन आउट, जब रिएक्शन आ रहा था, दिस वाज व्हाट वी कॉल अ रोल रिवर्सल सपोर्ट. ये जब स्विंग अप है तभी काम में आता, अदरवाइज इट्स ऑफ नो यूज. सो दैट सपोर्ट इज रेलेवेंट. नाउ माइक्रो अगर करते तो लेट मी, यहाँ पे देखिए ये लो से चैनल बनाओगे नहीं बनेगा, बिकॉज हाई सिंपल है. आपको रिवर्स चैनल बनाना, विच मीन्स यू फर्स्ट टेक द हाइस, टेक द लो और एक्सटेंड कर दो. नाउ यू गॉट इट हाउ टू ड्रॉ रिवर्स चैनल. रिवर्स चैनल मीन्स फर्स्ट यू टेक द हाई एंड देन द लो. या आई वांट यस फ्रॉम ऑल. So this is the reverse channel on the markets, और upside is 24,162. And देखिए बहुत बार क्या होता है ना, so can I now remove the reverse channel everybody? Okay. Now ये हाई अगर निकल गया तो एक आपको अपटिक मिलेगा. जब मैं अपटिक की बात करता हूं तो माय मैक्सिमम इज 50 पॉइंट्स. व्हाई? द स्ट्राइक इंटरवल इज 50 पॉइंट्स. So if this gets taken out, you can see a small spike, कल का high, which is somewhere around 24,150 levels. So market more or less defined है, clear है, buyer sellers intact है, trend intact है, swing intact है. Right. So that was Nifty. Now let's go and check the Bank Nifty. बैंक निफ्टी में अगर देखे तो स्ट्रेच तो है, हमने कल देखा था बैंक निफ्टी भी. तो ये जो लो है वो गैप है, 200 डीएम है, और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी एक कंसोलिडेशन में चला गया. तो स्ट्रेट लेट मी गो टू 60 मिनट्स टाइम फ्रेम. ऑन अ 60 मिनट्स इफ यू गो एंड लुक लेफ्ट,
देखिए ये जो स्मॉल लिटिल टिक था, गैप था, यहाँ पे भी अटक रहा मार्केट। आई जस्ट जूम इन दिस वन। सो मैं अभी इसको ही रेजिस्टेंस ले रहा हूँ। अगर ये क्रॉस किया तब ऊपर तक है नहीं, मुझे नहीं दिख रहा सप्लाई। मतलब जरूरी नहीं है आज का आज ही वहां चला जाए, बट जब तक 200 डीए में बैंक निफ्टी मेंटेन है, एवरीथिंग इज फाइन। इट लुक स्ट्रेच तो है, नो डाउट अबाउट इट। तो देखिए कल भी वो हाई पे मार्केट अटका था 2 दिन पहले। जो वो लेवल है 57,806। देखिए ये सब लेवल टूट जाते हैं ना, तो आपको ट्रेंडिंग ओआई में देखना नेक्स्ट ओआई बिल्डअप का है, वो एक लॉजिकल लेवल्स हो जाता है। नाउ स्ट्रेट अवे आई गो टू माय 15 मिनट्स टाइम फ्रेम चार्ट। देखिए चैनल यहाँ पे बनेगा नहीं, इट्स अ फ्लैट चैनल। सो व्हाट आई विल ट्राई टू नाउ मार्क इज माय पिवट पॉइंट्स एंड सपोर्ट। पिवट पॉइंट्स का मतलब है अगर 2-3 बार एक लो के आसपास से मार्केट अप डाउन किया तो ये आपका पिवट पॉइंट हो गया। तो पिवट पॉइंट में मॉर्निंग में क्या, एक थोड़ा नरमी आके वापस आपको थोड़ा अपसाइड देता है। और मैं देखिए कल का लो ले रहा हूँ, दिस इज यस्टरडेज लो। कल के लो के पास बेसिंग था, कैन यू सी दिस? ऑलवेज अ बेसिंग इज अ सपोर्ट। So I'll take yesterday's low and this entire basing and mark my support levels. So this is how Bank Nifty is positioned for the day. उसके बाद आपको VWAP डालना, and two things which you have to do after this is plot your VWAP and plot your trending OI. Cup and a handle Revti, I'm not that much a pattern guy. Sometimes I do Revti, but I go with the price action. Plus mark a channel. You can clearly now mark a channel on Bank Nifty. So I'll just adjust this high and this high. Everything very, see, I'm a classical guy who follows price action. You don't see much of the indicator oscillator. One thing which I'm glued to is VWAP and levels around VWAP. So this is how your bank nifty is looking like, right? Now let's go and check the options data. From the options data's perspective, as far as let's see today's expiry, which is Sensex. So OI statistics says as there is a heavy put writers are more than call writers, 3.88 crores and 2.87 crores. So where is the nearest biggest put writing? See the tower, it is 77,000, whereas market closed around 77,200. So आज के दिन सेंसेक्स में 77,000 level is going to be a crucial one. So let me go and check out the Sensex spot. I have over here, yes. Because today I guess there is a Sensex expiry. It's not guess, I think Thursday. Yeah, Sensex. So this is how Sensex is looking like on a टाइम फ्रेम। अगर आप देखो ना आज एक्सपायरी में, तो 77, 76, 500 और 76 तक द पुट इज इक्वल। फिर आपको देखना क्या ये नीचे वाले जो पुट ऑप्शंस है वो ऊपर शिफ्ट हो रहे क्या, तो दैट मीन्स द डिक्लाइन माइट गेट अरेस्टेड। बट आई एम टेकिंग यस्टरडेज लो। देखिए एक्सपायरी में कुछ भी होता है, राइट, बट दैट्स हाउ द मार्केट्स आर। कॉल राइटर्स आर वे अप हियर 78,000, जो कि करंट क्लोजिंग से 1,800 पॉइंट ऊपर है, और पुट राइटर्स 150 पॉइंट ऊपर है। तो आपको आज ओआई पे देखना है, ऑन ट्रेंडिंग ओआई, डोंट मिस इट। और अगर मैं सेंसेक्स में भी इफ आई वांट टू मार्क अ चैनल, आई एम अ बिग बिलीवर इन चैनल एज अ डे ट्रेडर। सो यहाँ से तो चैनल होगा नहीं, बिकॉज देन इट इज बिकम अ बिट क्लमजी द प्राइस एक्शन। लेट मी गो टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम चार्ट्स। इफ आई गो टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम चार्ट्स, ओआई को आप साथ में रखो। एवरीबडी हैज द स्टॉको इनक्रेड मनी इन इंस्टा ऑप्शंस ना। अब यहाँ से भी यू कैन डू बाइंग सेलिंग, मैं सामने ही रखता हूँ। सो लेट मी फिगर आउट क्या इसमें से कुछ निकल रहा। इफ आई टेक दिस लो and join this and this high, yes, I'm getting a perfect channel on Sensex also. Clear everybody? आपको देखना are this OI shifting higher? If then there will be a uptick, or else it might be a sideways, and post that, see, ये सब ब्रेकआउट लेवल्स है। ब्रेकआउट का मतलब क्या है, चलो 100 पॉइंट के ऊपर की सलामी मिल सकती है, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट, गॉट इट, ऑन अ डे ट्रेडिंग बेसिस। बिकॉज अगर ये हाई निकल जाते तो 100-150 पॉइंट का नेक्स्ट स्ट्राइक का ओआई तक एक स्पाइक आ सकता,
which as per current is showing at 77,500. Right? So that's how markets are today, and today we are bang on time. As I said, I'll try to do the sessions by 9 o'clock. The next 15 minutes, you have time to plan out your strategies. I don't want to keep you unnecessarily engaged. 15 minutes is good enough a time for us to figure out what the chart setting looks like. So that's all from my side, friends. Thanks and have a nice day. Sham ko fir milenge at 3:45.